हेलो बच्चों, मैं हूँ जयंती मैम और आपको पढ़ाने आई हूँ फिजिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। All the students have seen the prism, how it looks like. It's like a wedge-shaped body जिसकी दो surfaces जो हैं आपस में inclined हैं. Two surfaces which are inclined to each other at certain angle. And these two surfaces are the refracting surface क्योंकि इन्हीं surface से refraction होना है. So see now, if I say these two surfaces, this is 1, this is 2, 1, 2. These two surfaces are called as the refracting surfaces. ये दोनों refracting surfaces. ये refracting surfaces है. Angle, ये surfaces inclined हैं and they are making certain angle. This angle is called as what? The angle of prism. इसको angle of prism कहते हैं. This is the angle of prism. And this is also called as refracting angle. This is your refracting angle also. Refracting angle. कभी भी न्यूमेरिकल में अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है तो आप बच्चों समझ जाओ कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म. करेक्ट. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन 12th में आपको एक डेरिवेशन मिलेगा दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला. यू हैव टू डिराइव दैट एक्सप्रेशन. बीच में और भी रिलेशन आएंगे, बीच में कभी कभी वहां बीच में से भी आपको एक्सप्रेशन पूछेंगे डेरिवेशन के लिए. तो डिराइव करने से पहले वी जस्ट सी दैट हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. सो नाउ सी दिस इज द फर्स्ट सरफेस. And a ray is incident on this from air to the glass. It's going from air to the glass. So this is the incident ray. First we make a normal here. We draw a normal. There's a normal. So now this incident ray is going from rarer to denser. It should bend towards the normal. The normal की तरफ bend करेगा. Right? Again, it's going from glass to air. So it's going from denser to rarer. So it should bend away from the normal. Again, you draw a normal here. Normal. Now it's going to bend away from the normal. Bend away. This ray will be called as what? The emergent ray. इस ray को आप emergent ray बोलेंगे. And this, in between जो ray है, this is called as what? The refracted ray. इसको refracted ray बोलेंगे. Correct? So first we draw, this is the angle of incidence. फर्स्ट सरफेस है, इसको आई लिख लो या फिर I1 भी लिख सकते हो. सो दिस इज योर फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस I. देन दिस विल बी व्हाट? रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि फर्स्ट सरफेस है इसलिए उसको R1 लिखो. देन अगेन यू सी दिस रे इज इंसिडेंट हियर और ये नॉर्मल है तो एक्चुअली सरफेस का ये इंसिडेंट रे होना, इंसिडेंट एंगल होना चाहिए. बट इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड अगर रिट्रेस करेगा तो ये और ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्रैक्टेड होगा. ये दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो फॉर द सेकंड सरफेस देयरफॉर वी राइट इट एज R2. कभी भी हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही लिखते हैं फ्रॉम द सेकंड सरफेस. करेक्ट. नाउ यू सी दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द नॉर्मल. तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस. इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो चार चीजें देखी हमने. एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1, R2, refraction, angle of refraction from the first surface and the second surface and the angle of emergence. Right? Now, one more term which is called as angle of deviation. Of deviation. So, very important term. यहाँ ये भी क्या चीज है? This is the angle of prism. इसको पहले बना लेते हैं. ये angle of prism है. Now, see what is angle of deviation? Angle of deviation का मतलब है ये emergent ray कितना deviate हो गया है. So, it is the angle between the incident ray, direction of incident ray and the emergent ray. For that, what we do is incident ray को पीछे proceed करते हैं. We proceed it in the back. Proceeded, right? इस emergent ray को भी पीछे proceed करते हैं. You know, I'm going to proceed this. Proceeded. This is the emergent ray and this is the incident ray proceeded. इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, this angle is called as what? Angle of deviation. So what is the angle of deviation? It is the angle between the incident ray, the direction of incident ray and the emergent ray. Deviation. So this is the old del, angle of deviation. Correct? अब इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जानना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम कब होगा? When this angle of deviation is minimum. ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम तब होगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग टू गो पैरेलल टू दिस बेस.
if I name it as ABC है, तो जब ये refracted ray इस base के parallel जाएगा, then this angle will be the minimum angle of deviation given by del M. So for that del M, we are going to draw again the ray diagram, and now we are going to draw parallel to the base BC. So this is called as angle of minimum deviation. Minimum deviation, right? यहाँ पे थोड़ा triangle अपना बना लेते हैं. We make the triangle. Suppose I name it as O. I name this point as L, right? And now we see how to make the ray diagram when there is minimum deviation. So now we make this diagram when the angle is of minimum deviation. That means this ray, that is the refracted ray, should go parallel to the base. So we draw the figure. This is your ABC. This is the angle of prism. Now again we draw. So this is your incident ray. This is incident ray. Draw a normal here. This is the normal. This is the angle of incidence. Now the ray will go parallel to the base BC. So we're going to draw a refracted ray which is parallel to the base BC. This is a refracted ray. Again we draw a normal here. This is a normal drawn. This ray is going to bend away from the normal. Away from the normal. Right? Now, again, we have to make what? The angle of minimum deviation. इस ray को proceed करें, इसको भी proceed करें. In the back, so we proceeded. Proceed करते, इसको भी proceed करते. Then this angle will be the angle of minimum deviation. Why minimum? Because this refracted ray is parallel to what? Parallel to the base BC. Now we name it. This is the incident ray. This suppose name it P. This is Q, R, and S. Right? This is the angle of emergence. So we write it as E and here R. यहाँ लिख देते. Just we erase it slightly. This is the emergent ray. This is the angle of emergence. This is D. This point is what? R. And then S. Now see, this whole figure you see and name it here also. This is L suppose and this is M or O. Write it as O. Now first you see that this del M is what? Del M is the angle of minimum deviation. Minimum deviation. Right? Now we have to find a formula, a relation or the present formula. First what we do, we take this quadrilateral AQOE, AQOR. पहले इस quadrilateral को लेते हैं और तुम सब बच्चों को पता है कि quadrilateral में चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए 360 डिग्री. So I take this quadrilateral in quadrilateral then is AQOR, AQOR. Sum of all the angles, this angle, this angle, this angle. और ध्यान से देखो बच्चों ये एंगल कितने का है. This complete angle is of 90 degree. पहले इसको भी नेमिंग कर लेते हैं. नेमिंग नहीं किया इसमें. This is R1 and this is your R2. Now you see this angle. This angle is normal. ये normal है. So this angle will be what? 90 degree का. ये angle भी कितने का होगा? 90 degree का. So the sum of this, this, this and this. चारों का sum 360 degree. So we write here angle A. Angle, name it properly. AQO. Angle AQO plus this angle, angle O, plus angle ARO. Angle ARO should be equal to how much? 360 degree. लेकिन हमें पता है कि इन दोनों का सम कितने का है? This and this is of 90 degree. Normal है यहाँ पे. इन दोनों का सम, this and this will be 90 degree. इनका सम 90 degree है. Therefore, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? This will be 360 minus 180, that is 180. From the conclusion we get that angle AQO plus angle ARO will be 90 plus 90. That is your 180 degree. Therefore, we get the first conclusion that angle A plus angle O is 180 degree. This is the first one from the quadrilateral. Now we see the triangle. Which triangle? QOR. इस triangle को देखेंगे. So now you see in triangle QOR, QOR.
OR. इसको देखा? Now you see this R1 plus R2 plus angle O. Again it is how much? This is your 180 degree. Triangle में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 degree. So we now write R1 plus R2 plus angle O is equal to how much? 180 degree. This is equation 2. Now you see both are 180 degree. We can compare these two and write one conclusion which is very important. एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा लेकिन वो बहुत important है. तो कंपेयर करते हैं, comparing 1 and 2. If we compare 1 and 2, comparing 1 and 2, what we get? Angle A plus angle O is equal to R1 plus R2 plus angle O. Compare करा. So these two, angle O goes. And we get a very important conclusion. A is equal to R1 plus R2. ये पहला कंक्लूजन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन नंबर 3 डाल देते. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड कि ये del m जो है दिस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये LQR का एक्सटीरियर एंगल है. द एक्सटीरियर एंगल, एंड ऑल ऑफ यू नो इन मैथ्स कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. नाउ सी व्हिच इज द अपोजिट इंटीरियर. एक ये अपोजिट इंटीरियर है और एक ये अपोजिट इंटीरियर है, isn't it? Now you see properly, this is I, vertically opposite ये I होगा, और ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा? This will become as I minus R1. जहाँ से देखो बच्चों ये I है तो ये complete I है, this I minus R1. यहाँ देखो ये E है तो ये complete E है, तो this angle will be what? E minus R2. E minus R2. Now you tell that this del m must be the sum of this and this. So now we write that del m is equal to the sum of these two opposite interior angle, right? Now see what we have got as del m. So del m we are getting it as del m is equal to, first क्या था? I minus R1, and then the next was your E minus R2, correct? अब हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे इसको. So del m will come out as, del m will be your I plus E, I plus, this will be your minus common, R1 plus R2. Don't write it with I1. With I1, we write it simply as what? I. Write it with I plus E. Just now we have done R1 plus R2 is what? A. अगर R1 plus R2 A है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? A. So del m is equal to I plus E minus A. Again, a very, very important formula. It's about important formula. We name it as what? 4. इसको 4 डाल देते. Correct. Now, आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि prove that A plus del m is equal to I plus C. अब देखो यही से आ रहा. So I can write this as what? A plus, इसको इधर ले आते हैं. A plus del m is equal to I plus E. Correct? We got it. अब मुझे ये एक्सप्रेशन याद रखना. Now from this expression, if we plot a graph between I, angle of incidence and the angle of deviation, you are doing in the practicals also. अब क्या करते हो? टेबल बनाते हो, angle of incidence and angle of deviation का plotting करते हो. जब plotting करते हो तो आपको एक graph मिलता है. That graph is of what type? You see the graph is between the angle of incidence and the angle of deviation. इन दोनों के बीच में ग्राफ. If you plot the graph, पहले क्या देखोगे? जैसे जैसे angle of incidence बढ़ेगा, पहले angle of deviation कम होता है. उसके बाद particular angle of incidence के बाद this angle is going to increase. Correct? So the graph is something like this. इस तरह का ग्राफ है. Correct? This is the graph between deviation and I. अब बच्चों ध्यान से देखो, किसी particular deviation को देखते हैं. मान लो ये deviation. अब इस एंगल ऑफ डेविएशन में आप ध्यान से देखो, क्या इसमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस, 2 एंगल्स ने कट किया 2 जगह. तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस. इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, तो दिस इज द फर्स्ट एंगल I1, और यहाँ ड्रॉप करते हैं, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन I2. बट एक्चुअली I2 नहीं है वो, दैट इज फॉर E. आप फिगर देखो पहला, just see this is I, और इधर से देखो तो ये एंगल ऑफ क्या है? It's the angle of emergence. So I can write this I2 as what? I2 as E. This I2 is nothing but it is your E. ये एंगल ऑफ emergence. Correct? लेकिन आप एक चीज देखो बच्चों, जहां ये मिनिमम हो गई है, if you see this value, और हम यहाँ पे देखते हैं इसको, we see this is what? The minimum deviation. बिल्कुल नीचे जा रहा है ग्राफ. This is the angle of minimum deviation.
अब इस पर्टिकुलर एंगल में देखो कि क्या यहाँ पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, only a single angle of incidence. And why it is so? Because at this angle, the angle of incidence from this side and the angle of emergence from this side is going to become equal. इस angle में I has become equal to what? E. Correct? लेकिन बाकी हर जगह कहाँ है? Everywhere there are two angles. One angle is what? I1, which is I, and the other angle is what? I2 is equal to E. तो आपको कंक्लूजन क्या मिला? इस प्लॉटिंग करने के बाद हमने एक चीज देख ली कि when del is equal to, when del is equal to del m, जब del m के बराबर है, so we have seen that the rays, the refracted ray is going parallel to the base BC, number one. So I write this, the refracted ray, we have named it as what? की नेमिंग कैसे की थी हमने? Refracted ray was your QR. So the QR is parallel to the base BC. Correct? Then what conclusion we have got from the graph? That I is equal to E. अगर I E के बराबर है तो definitely R1 भी R2 के बराबर है. So we can write R1 is also equal to R2 and name it as what? का नाम क्या रख दिया? अब we are going to get the conclusion now. R1 and R2 both are equal. Now we are going to put in which formula? अभी एक formula बताया था मैंने. A is equal to what? R1 plus R2. दोनों बराबर है. Then A is equal to what? 2R. Therefore, we get first conclusion that R is equal to A by 2. अब angle of refraction मिला कब? Minimum deviation में. We have seen this figure. ये minimum deviation का figure है. इस deviation में क्या conclusion मिला मुझे? That this R is equal to what? A by 2. Then comes कि मुझे I क्या मिलेगा? I यहाँ पे रखेंगे. We are going to place it here. यहाँ देखिए आप क्या रखोगे? I और E दोनों बराबर. Instead of E, we can write it as what? I. तो E की जगह क्या रख देंगे? I. So now you just see from 4, del M is equal to E की जगह I plus I minus A. Correct? So we can write it as A plus del M is equal to 2I. ये मुझे मिला 2I. तो I क्या आ जाएगा? This I will come out as A plus del M by 2. This we have got. So we got I, we got R. और तुम सब बच्चों को पता है कि मुझे प्रिज्म फॉर्मूले में क्या चाहिए? The refractive index का expression. And all of you know the Snell's law, which I have already taught you. So we have got the angle of incidence and the angle of refraction. So we got this I as what? I was equal to A plus del M by 2. And the R is coming out as A by 2. And now we have to derive the present formula. It's very simple. The present formula from Snell's law, we are going to use what the Snell's law. क्योंकि present formula एक relation है refractive index का और इन सब angle का, angle of incidence, then A and all. So we know that from Snell's law, N is equal to refractive index, N is or U is equal to sin I by sin R. Is sin I by sin R, right? And we know that I is how much? This, and R we are going to put. So we can write this mu as sin A plus del M by 2 divided by sin A by 2. And this formula is called as what? The Prism formula. इस formula को क्या कहते हैं? It's called as the Prism formula. A very important formula for the numericals. Got it? So this is the Prism formula. अब इसको mu से लिखो या n से लिखो, बात एक ही है. Correct? अब इसमें कुछ चीजें और हैं. मैंने फॉर्मूले बहुत सारे बताए हैं आपको. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है. If the prism is thin, अगर ये prism thin है, then A and del M both are very small. If we say that if the prism is thin, small angle है, this is thin. ये thin, this thin angle. You see this angle of prism is what? A is small. As well as del M. ये दोनों के दोनों क्या होंगे? A and del M will be small. ये दोनों छोटे होंगे. If these two are small, you know that if angle is very small, the sin theta is nearly equal to what? Theta. If theta is small, I'm writing this. If theta is small, that means sin theta is nearly equal to what? Theta. This conclusion we know. तो इसको यहाँ apply करते हैं. We apply here. So if we apply here, इसकी जगह क्या लिखोगे? A plus del M by 2, simply sin हटा दोगे
और यहाँ पे साइन हटा दोगे तो a/2 होगा. So we get a formula for refractive index. n is equal to, or mu is equal to, इसको हटाइए, a plus del m by 2. साइन थीटा की जगह डायरेक्टली क्या रख दिया, थीटा, और साइन a/2 की जगह क्या रख देंगे, a/2. Correct? So this 2 will go, and we are going to get what? n is equal to 2 goes, we get a plus del m divided by a. And the formula that we get is Na is equal to, from here we write, Na is equal to a plus del m. We got this? Right? And now from here we can write that del m is equal to what? Na minus a. Or we can write that del m is equal to, we take common, क्या common ले लेते हैं, a को. If we take common a, then this is n minus 1 into a. This is the formula when this is a thin prism. ये तभी होगा when it is the thin prism. Only for this case. Thin prism के लिए this del m is equal to what? n minus 1a. Even अगर ये del भी होगा तब भी del क्या होगा, n minus 1a होगा. So first we see all the formula that we have got from here very fast. So the first formula that we have got, that r is equal to, या r1 plus r2 is equal to what? a. ये पहला फॉर्मूला था. उसके बाद हमें क्या मिला था, सेकंड फॉर्मूला क्या था, a plus del m was equal to I plus e. और we can write that del m जो एक्चुअल आया था वो I plus e minus a. This formula we have got, right? Now when we have seen del m, तो मुझे एक चीज पता चली कि I is equal to e और e I बराबर थे, and from this we have got the conclusion, that is the present formula, n is equal to what? Sine a plus del m by 2 divided by sine a by 2. This is the formula we have got, right? This is called as what? The prism formula. But we have seen, if the prism is thin, we got a formula that del m is equal to n minus 1 into a. Correct? अगर ये del m भी नहीं है, del है, तब भी क्या होगा? Del will be equal to n minus 1 into a. मैंने फॉर्मूले आपको इसलिए बताए हैं जिससे कि हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकें. And the concept I think is clear. So now we start with the numericals. तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूले बता दिए हैं, किसके? प्रिज्म के सब फॉर्मूले. तो आपको फॉर्मूले सबसे पहले याद होने हैं जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स आराम से हो. दूसरी चीज है, ये आप जब भी क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल तो यू मस्ट राइट द गिवन. आप गिवन लिखो, आपको अपने आप फॉर्मूला समझ में आएगा एंड यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स. सो लेट अस सी कि क्या दिया है. A ray of light is passing through a prism such that the angle of incidence is equal to angle of emergence. मतलब I is equal to what? E. It's given to you. Then the angle of emergence is 3/4 the angle of prism. That means angle of emergence E is 3/4 of A. This is also given to you. Next, find the angle of deviation. You have to find out then find out करना है. और दिया क्या है? Angle of prism is given as 30 degree. अब बच्चों देखो, आप जैसे ही गिवन लिखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. You see, this is the relation between del, I, E and A, which I have told you. So we'll use that formula. Del plus A is equal to I plus E. So del will come out as I plus E minus A. And this E and I both are equal, so instead of E or instead of it as E, तो यहाँ लिख देंगे del will come out as I की जगह E लिखते हैं, so this will be your E plus E minus A, right? So what is E plus E? That is 2E. So I can write as 2E minus it, right? E की जगह क्या लिखेंगे? 3/4. So del will be your 2 into 3/4 of E, 3/4 of A minus A. This will give you how much? 3/2A. 3/2A means what? If we write it as 1.5A minus A, this will give you what? This will give you 0.5A. Right? And you know that what is the value of A? A की value आपको पता है, so just put this value, you will get the answer. So if I put this value, this del will come out as, this del will be equal to 0.5 into A. A is how much? 30 degrees. So I put it as 30 degree. Correct. So del will come out as how much?
Multiply this will be your 15 degree. So del has come out. You got the answer. Right, so see the next question. Next question is what? The minimum deviation produced by a glass prism of angle 60 degrees, 30 degrees. लैंग्वेज में हमेशा ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये बोला है कि मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री. मतलब ये जो 60 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल है. सो ए 60 डिग्री, ए 60 डिग्री का है और दिया कौन सी चीज है? मिनिमम डेविएशन दिया है. दैट मींस डेल इज गिवन टू यू एज हाउ मच? 30 डिग्री. जो डेल एम है मिनिमम डेविएशन, दैट इज योर 30 डिग्री. ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री हो गया. राइट. Now, if the velocity of light in vacuum is, or velocity of light in vacuum in C is given to you as 3 into 10 power 8 meter per second, then they're asking you, find the velocity of glass. मतलब glass के अंदर velocity क्या होगी? अब आप देखो बच्चों, आपको इससे पहले जो पढ़ाया वो भी याद रखना और अभी जो पढ़ाया वो भी याद रखना. सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पे A, डेल एम आपके पास है, क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल? Yes. कौन सा फॉर्मूला? प्रिज्म फॉर्मूला. सो वी कैन यूज एन या म्यू, जो भी लिखना चाहो. एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2. वी आर गोइंग टू यूज दिस एंड फाइंड आउट व्हाट एन. क्योंकि एन फाइंड आउट करने से फायदा क्या मुझे? क्योंकि एन का बहुत फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सी बाई वी, वेलोसिटी इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी इन मीडियम. सो वी कैन कंपेयर द टू एंड फाइंड द आंसर फॉर बी. राइट. So now we are going to put what? A and del. Put करिए इसमें. N is equal to sin. A की जगह put करते हैं 60. Del N की जगह put करते हैं 30 divided by 2. And this is your sin. A means 60. So it is 60 by 2. Find out this value. This N will come out as sin. How much it is? 60 plus 90 by 2. That is 45. ये complete में बचा. ये full division है by 2. 60 plus 9, 30. That means 90 by 2 will give you what? Sin 45. So this value is sin 45 degree. Divided by, this is how much? This is sin 30 degree. Trigonometry का टेबल सबको याद है, 10 तक आपने पढ़ा है. तो आपको याद है कि sin 45 is how much? 1 by root 2. Sin 30 is how much? 1 by 2. Correct. Now if we put this value, this n will come out as 2 by root 2. So we get n as how much? Root 2. n की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2 आ गई. लेकिन n नहीं पूछा रहे. क्या पूछा है? They've asked you what? The velocity. So we have to find out the velocity. So we use which formula now? We can use n is equal to c by v. इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं. So now if I put this value, this v, they are asking you what? v. So v will be equal to what? c by n. c की वैल्यू कितनी है? c is how much? We know that value, that is 3 into 10 power 8. And how much is n? N is, we have got it, that is your root 2. So we got the value as 3 by root 2 into 10 power 8. और अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? इसको रैशनलाइज करोगे और रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई ये रूट 2 इंटू रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 3 रूट 2 by 2 into 10 to the power 8. You can multiply this. This v will come out as 3 into 1.414 by 2 into 10 to the power 8. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. You can calculate the value. If you calculate this value, you will get it as v is equal to 3 into 1.482 into 10 to the power 8. So if you multiply, you will get it as 12. This is your 4. This is again 12. And this is your 314. Divided by 2 into 10 to the power 8. And the answer will come out as 2.121 into 10 power 8 meter per second. तो देखो बच्चों, आपको दो फॉर्मूलेस पे यूज हुए. एक पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C by V और दूसरा प्रिज्म फॉर्मूला. राइट. So see this question, what they are asking you. First you go through the question. A ray of light is incident at a certain angle on one face of the prism of refracting angle 30 degree. Refracting angle, all of you know that is the angle of refraction. Ye refracting angle, this is given to you as 30 degree. This is nothing but the angle of prism here. This is the angle of prism. So A is given as 30 degree.
path. ये अपने path को retrace करके चली जाती है. It goes back. That means this incident ray which is coming to the space must be normal. ये कैसा होना चाहिए? Normal मतलब ये 90 डिग्री का होना चाहिए. This should be of 90 degree. Now, opposite face of the prism which is silvered. क्योंकि ये silver कर दिया है, इसे polishing कर दिया, silvered है. It's going to reflect back. ये reflect हो रहा है. Calculate the angle of incidence of the ray of light if the refractive index is 1.41. The refractive index is given to you as 1. Right? What they're asking you? Find the angle of incidence, means I. I आपको पूछा गया है. Now say this I they are asking you. ये I पूछा है. So I will make a figure so that it's easier for you. So make this angle of prism as 30 degree. ये 30 degree है. This is 30 degree. This is silvered. इसको silvering कर दी गई है. That is silvered. And they're asking you what? The angle of incidence. मतलब ये angle पूछा है. This angle they have asked you. And this ray is going to retrace back. यहाँ से तो reflect हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे retrace करेगी, मतलब ये कैसे जाएगी? It should go definitely normal. ये 90 degree पे गिरना चाहिए. This should be 90 degree. Now, what to do in this? ये हमें पता है ये 90 degree पे गिरा, इसलिए क्या हो गया? Retracing one. It has retraced. Now, what they're asking you is the angle of incidence. बहुत simple है. और कुछ दिया है, देखिए, refractive index भी दिया हुआ है 1.41. We do the question like this. कि यहाँ पे अगर ये 90 है, ये 60 है, तो definitely this angle will be how much? 60 degree. ये angle कितने का होगा? 60 का होगा. This should be 60 degree. Why? Because sum of all the angles in a triangle is 180 degree. तो ये angle 60 का हो गया. And what about this angle? ये angle कितने का होगा? This angle. क्योंकि ये normal है. तो अगर ये normal है, तो definitely this will be your 90 minus 60. That is 30 degree. तो angle of refraction लिख लेते हैं 30 degree का. R आ गया. So we got R is equal to how much? 30. ये 30 degree मिल गया. Refractive index is given to you as 1.41. जिसको कि आप √2 भी दे सकते हो. You can take it also. And we know this formula now. That N is equal to what? Sin I by sin R. So we are going to use this formula. Sin I by sin R. Use this formula. N is 1.41. So we can write this as what? इसकी वैल्यू √2 डाल देते हैं. So if we place this value, we are going to get √2 is equal to what? Sin I by sin 30. Right? So how much will be the sin I? Sin I will be equal to √2 into sin 30. All of you know the sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. Right? So now from here they get that sin I is equal to √2, 2. That means we are left with 1/√2. We got 1/√2. All of you know that 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 45. So sin I will be equal to 45 degree. That is sin 45 degree. We can write this as sin 45. 1/√2 की value is sin 45. If I write it sin 45, that means I will come out as how much? Angle of incidence we have got is equal to how much? 45 degree. Correct? So now we see the next question. So in this question, what is given to you that you see first? The refractive index of the material of a prism is 1.5. आपको देख के रखा है that N is equal to what? 1.5. The prism is placed in the minimum deviation position. मतलब आपको दिमाग में रखना है कि the position is del M वाली position. और सब बच्चों को याद है कि del M में क्या क्या होता है. That you must remember. Now, is placed in minimum deviation position. The angle of incidence is how much? 30 degree. I की value 30 degree दे के रखी है. And find the angle of prism. आपको angle of prism find out करना है. And also the angle of minimum deviation. आपको del M भी find out करना है. You have to find out both. Angle of prism as well as angle of minimum deviation. दोनों find out करने. और आपको एक given चीज दे के रखी है. Definitely इसका use कहीं ना कहीं है. क्योंकि आपको वहां पे टेबल अलाउड नहीं है. Neither in NEET, nor in JEE, nor in CBSE. Nothing like table. लॉग टेबल वो लोग देंगे ही नहीं. And they like this. तो स्टार्ट करते हैं. देखो आपको ये दोनों चीजें पूछी है, लेकिन एक कंडीशन हमें याद है कि डेलन की कंडीशन है ये. अगर ये डेलन की कंडीशन हमें याद है that I is equal to what? A.
ये दोनों बराबर है, R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों भी बराबर है, राइट। और डेलम का फॉर्मूला जो था, वो डेलम का फॉर्मूला क्या था, डेलम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, और आई की जगह क्या रख देंगे, ई की जगह क्या रख सकते हैं, आई, बिकॉज वी नो दैट आई इज 30 डिग्री, तो ई की जगह आई रख देते हैं। तो दिस डेलम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई, दैट इज 2i, तो रख देते हैं ना, आई प्लस आई, सो डेलम प्लस ए इज कमिंग आउट एज 2i, ये मुझे मिल गया। अब क्योंकि मुझे दोनों नहीं पता है, ए भी नहीं पता और डेलन भी नहीं पता, वी कैन फाइंड आउट ए प्लस डेलन की वैल्यू, आई की वैल्यू रख देते हैं, एंड वी कैन राइट दैट डेलन प्लस ए इज इक्वल टू 2 into 30 will give you how much, 60 डिग्री। तो आपको ए प्लस डेलन की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। अब आप देखो बच्चों की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, सो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, द प्रिज्म फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, n इज इक्वल साइन a प्लस डेलन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, इसको यूज करेंगे हम लोग। n की वैल्यू दी हुई है 1.5, we can write this 1.5 and this is this here, a plus डेलन is 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिवाइडेड बाई 2 will give you how much, 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन 60 बाई 2, दैट इज 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। टाइम हमको a की वैल्यू चाहिए, वी नीड व्हाट, a, तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस करके इसको यहाँ ले आते हैं। सो दिस इज योर साइन a बाई 2, दिस इज साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री हो गया, एंड दिस इज योर 1.5। Now you see, just put the value, sin a by 2, sin a by 2 is equal to 1 by 2 into 1.5. 1.5 into 2 will give you how much? Multiply kariye, you are going to get it as 1 by 3. So we now get it as sin a by 2 is equal to 1 by 3. So 1 by 3. इसकी वैल्यू कितनी है, 1 by 3. अब बच्चों देखो आप इसको कि 1/3 का यूज कहाँ पे है, 1/3 is how much, 0.333, so I can put it here, this will be your sin a by 2 and this is your 0.333. Now you see we are using this, so a by 2 will come out as sin inverse 0.333, and we know the value of this, इसकी वैल्यू हमें पता है how much, 19 degree 28 minutes. So I put this value. So a by 2 will be 98 degree and 28 minutes. So I put this value. Now what to do? Cross multiply. जब cross करोगे बच्चों तो minute के साथ अलग, degree के साथ अलग. So this a की value will come out as, multiply this. This will be your 56 minutes. And this is your 38 degree. So we got it as 38 degree 56 minutes. We got the value of a. a की वैल्यू आई है, लेकिन we have to find out what, डेलम। आप देखो आपको डेलम भी फाइंड आउट करना है, तो किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, we are going to use, यहाँ से देखो आप यूज कर सकते हो इसी को, डेलम प्लस a किसके बराबर है, 60, and we have got what, a, और a हमें मिल चुका है। So we are going to place डेलम प्लस a is equal to 60 और a की वैल्यू डाल देते हैं। So in the next step we are going to write a plus डेलम is equal to 60 डिग्री, और क्या निकाल लिया था हमने, we have got a as 38 degree 56 minutes, so we are going to place it, a is equal to 38 degree 56 minutes. So how much will be delta n, डेलम will be equal to 60 degree minus, so we come to this side, 38 degree 56 minutes. अब बच्चों यहाँ पे गलती नहीं करो, क्योंकि आप डिग्री से डिग्री को माइनस कर सकते हो, मिनट को मिनट से माइनस कर सकते हो। तो करना क्या चाहिए, आप एक काम करो, इसमें से 1 डिग्री निकाल दो, बिकॉज आपने क्लास 11 में एक चीज पढ़ी थी कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो करते क्या है, इसमें से 1 डिग्री निकाल देते हैं और 1 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, 60 मिनट। तो अगर आप इसमें से 1 डिग्री निकालोगे तो उसकी कम आउट है 59 डिग्री और मिनट कितना, 60 मिनट। किससे माइनस करना है आपको, 38 डिग्री एंड 56 मिनट। आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर लेते हैं यहीं पे, 38 डिग्री एंड 56 मिनट, यहाँ माइनस करते हैं, how much we get, this is your 4 minute, यहाँ माइनस करिए, this will come out as
1 and this is your 2. So this will be your 21 degree. So we got the value of del M is how much? 21 degree 4 minutes. So we got the answer for del M also. So दोनों answer मिल गए. A भी मिल गया and del M also we have got. Correct? So now we do the next question. The next question is, a ray of light passing through a prism have refractive index √3, suffers minimum deviation √3. N is equal to how much? √3 given to you. √2, sorry. This is a √2 given to you. And suffer again del M. That means del M की condition हमें याद रखनी है. Definitely. It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction. This I is equal to how much? 2R. I की value 2R है. Right, within the prism, what is the angle of prism? And they are asking you A. तो हमने given लिख लिया. Del M की condition पता है. I 2R के बराबर दिया हुआ है. And A हमको find out करना है. Now see what to do. जब conditions हम del M की देख रहे हैं, हमें याद है कि I was equal to E. No doubt. दूसरा पता था मुझे कि R1 is equal to R2 is equal to R. और तीसरा फॉर्मूला मुझे ये भी पता है कि R इक्वल टू A होता है, क्योंकि हमारा del M की दोनों बराबर हैं, तो 2R is equal to A. गुड. हमको ये पता चल गया कि 2R जिसके बराबर है A के बराबर. नाउ यू सी फ्रॉम हियर I 2R है और यहाँ पे 2R A के बराबर आ गया, तो I किसके बराबर हो गया? I has come out as equal to what? A. I जो है वो आपके A के बराबर आ गया. You got it as A. Right? Now next. What is the angle of prism? लेकिन angle of prism ही मुझे निकालना है, तो del M के लिए भी कुछ करना पड़ेगा. तो del M का फॉर्मूला हमें याद है कि del M plus A is equal to I plus E. E और I दोनों बराबर हैं, so del M plus A is equal to I लिख लेते हैं. So this will be your E की जगह I, so this I plus I. Right? So del M will be equal to what? 2I minus A. 2I. 2I का मतलब क्या लिखा जाएगा? 2I will be equal to what? यहाँ पे देखो आप. This I was equal to how much? A. यहाँ से देखो. Don't see this. I is equal to A. हम यहाँ पे I को A लिखते हैं. Then del M is equal to what? 2A minus A. That means, very interesting, del M भी कितना आ रहा है? A. Del M भी A आ रहा है और I भी A आ रहा है. And now what they're asking you is A. अब आपको A पूछा है. Now what you will apply? Definitely, क्योंकि M दिया हुआ है, you are going to apply what? That prism formula. You are going to use the prism formula. So use the prism formula. N is equal to sine A plus del M by 2 divided by sine A by 2. इसको यूज करें और जो जो मैंने निकाला है उसको पुट करते हैं. del M भी A है, I भी A है और N की वैल्यू कितनी है? √2. So we put all the things together. So N is equal to √2 sin A plus del M की जगह भी क्या लिखा जाएगा? A. So 2A by 2 divided by sin A by 2. So this is 2A by 2. 2A by 2 का मतलब क्या है? 2 will go and you are going to get what? Sin A. So √2 is equal to sin. ये समझ में आया ना आपको? 2A आएगा. 2A divided by 2 will give you what? A. So you are going to get sin A divided by sin A by 2. Now what to do? आपको trigonometry फिर से याद होनी है. You know that sin 2 theta is equal to what? Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. This value all of you know. तो अगर ये वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं. We are going to do sin A की जगह क्या लिखना मुझे? 2 sin A cos A by 2. So we are going to place √2 is equal to 2 sin A by 2. क्योंकि यहाँ पे sin A है. Half of the angle क्या हो जाएगा? A by 2. So just 2 sin A by 2 cos A by 2 divided by sin A by 2. What goes? Sin A by 2, sin A by 2 goes. And you are going to get √2 is equal to 2 cos A by 2. This 2 will come down. It will come out as √2 by 2 is equal to cos A by 2. So we are getting the value cos A by 2 की value आ रही है. How much? √2 by 2 is how? √2. So I write it as 1 by √2. And what is 1 by √2? All of you know that is cos 45. So we are going to place it. This will come out as cos A by 2
is equal to what? Cos 45. So I write it as cos 45. So now A by 2 is coming out as 45 degree. Therefore, A will come out as 90 degree. So we got the angle of prism that they are asking you. So now we do the next question. Now see how to do this numerical. इस numerical को कैसे करेंगे? ये question sample paper का है. And it's an important question. See now what's given to you. A beam of light of wavelength 400 nanometer. That means lambda is given to you as lambda is 400 nanometer. इसको हम लोग convert किस में कर लेंगे? मीटर में. Then normally on a right angle prism, this is a right angle prism, that means this is of 90 degree. 90 degree का. Now it is observed that the light just grazes the surface. ये light यहाँ पे आने के बाद graze कर रहा है. It's grazing along the interface. ये graze कर रहा. Then they have given the refractive index varies with wavelength as per the relation. That means mu lambda is given to you as 1.2 plus b by lambda square. ये relation देके रखा आपको refractive index का. Then find the value of b. You have to find out the value of this b. b एक constant है जिसकी value आपको find out करनी है. Then refractive index, find b as well as you have to find out the refractive index of the prism when the wavelength is 5000 angstrom. और आपको refractive index फिर से निकालना है. Again you have to find out the refractive index when the change to 5000 angstrom. Correct? पहले आपको देके रखा है वेवलेंथ इतना है और बी की वैल्यू निकालो. दूसरी बार वेवलेंथ चेंज कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा. आप सबको पता है कलर के साथ साथ इसी प्रिज्म में, इफ यू सी दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म में एज दी चेंज द कलर द वेवलेंथ इज चेंजिंग. और अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा. Reason is what? A Cauchy's formula is there based on that, which I will tell you afterwards. Okay. So now what we have to do? We have to find out B. लेकिन उसको करने से पहले खुद एक फिगर बनाते हैं. We make a figure that this is a right angle prism. We make a right angle prism. Right angle prism. This angle is of 90 degree. The ray is coming normal to it, striking the space, and then it's going to graze along it. ये graze कर रहा है. This is grazing. So we draw a normal here. ड्रॉ करते हैं. सब बच्चों को याद है ग्रेस कब करेगा? जब ये एंगल कौन सा होगा? क्रिटिकल एंगल. दिस एंगल इज डेफिनेटली वांट द क्रिटिकल एंगल, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज IC. और यहाँ देखो क्या दिया है? थीटा C. सो वी कैन राइट इट एज थीटा C. सो वी कैन कॉल इट एज थीटा C. वन मोर एंगल इज गिवन टू यू दैट दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल आपको थीटा दिया है. तो आप देखो जरा कि जो थीटा C है, थीटा C भी थीटा के बराबर होगा. क्यों होगा? आप देखिए फिगर में. दिस इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का है. ये एंगल कितने का होगा? 90. और आपको पता है ये नॉर्मल है. अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितने का होगा? दिस एंगल मस्ट ऑल्सो बी व्हाट? थीटा. दैट मीन्स दिस क्रिटिकल एंगल थीटा C इज नथिंग बट थीटा. तो क्रिटिकल एंगल भी किसके बराबर आ गया? थीटा के बराबर. राइट? तो सबसे पहले बी फाइंड आउट करते हैं. आप ध्यान से देखो बच्चों कि मुझे बी फाइंड आउट करने के लिए लेमडा है मेरे पास. ये 1.2 है. मुझे क्या चाहिए? म्यू लेमडा. कंडीशन कौन सी है? TIR की. All of you know that the refractive index is equal to what? 1 by sin IC. IC की जगह what we are going to write? Theta C. यहाँ theta C लिख देते हैं. So now as you see that again they have given some hint here. यहाँ दे के रखा because table is not allowed. तो यहाँ से हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा. Let us see what we are going to get. Theta C की वैल्यू मिल जाएगी. Sin theta C की वैल्यू है because theta C is given as theta C is sin inverse 0.625. Therefore, sin theta C will come out as 0.625. अब क्या है? Sin theta C मिल गया. We can find out the refractive index. So we get this value. Mu is equal to 1 by 0.625. ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं. पॉइंट रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 3 zeros. We can cut it with 25. 25 से कट करिए. If you cut it with 25, 25 and this is your 4 0. Again you can cut by 5. This is 8 and this is 5. So we are going to get 8 by 5. How much is 8 by 5? That is 1.6. We got mu.
जब mu की वैल्यू मिल गई तो we are going to put it here in this expression and we are going to get the value of b. और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी. So we are again going to write the expression mu is equal to 1.2 plus b by lambda square. Mu we have got it as 1.6. This is 1.2. B we have to find out. And lambda was how much? 400 nanometer, 10 to the power minus 9 meter. This we are going to put it here. यहाँ पे इसको put कर देंगे. We are going to put it here. So if we put this value, this will come out as 400 into 10 to the power minus 9 whole square. This we are going to put. So we have put this value. So we put this value, we are going to get the answer as what? 1.6 minus 1 is equal to b. Square it up. If you square it, this will come out as 16. It's how many zeros? 4 zeros. 1, 2, 3, 4. And this will be your 10 to the power minus 18. Right? Now you can get this. This 0.4 cross multiply. This is your 16 into power collect karo. Always remember that you have to collect the powers. 4 है, यहाँ पे 10 to the power 16 है, तो 4 0 क्या हो जाएगा? This will become 10 to the power minus 14 is equal to b. So we got the value of b as how much? 6.4 into 10 to the power minus 14. You have to write the unit also. Unit कैसे लिखोगे? आप इस पूरे सिस्टम को देखो बच्चों. म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है. लैम्डा स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो डेफिनेटली इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर स्क्वायर. So this will come out as meter square. We got the value of b. b की वैल्यू हमें मिल गई. Right? So next what they are asking you, एक और चीज पूछी गई है. क्या? They have asked you कि mu की वैल्यू बताइए जब lambda is how much? 5000 angstrom. So we have to find out mu की वैल्यू. So we are going to get the value of mu. So now you see, again we are going to use this formula. Mu is equal to 1.2 plus b by lambda square. But now the lambda is how much? Angstrom. All of you know that 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. That we are going to place here. So mu will come out as 1.2 plus b. b की वैल्यू कितनी है? 6.4 into 10 to the power minus 14 divided by lambda is how much? 5000 into 10 to the power minus 10 whole square. Square it. So now we are going to get mu is equal to 1.2 plus. This will be your 6.4 into 10 power minus 14. Now you solve it. 5 का square 25. यहाँ देखो 3 0 है तो 10 power minus 7. Minus 7 का square will be how much? 10 power minus 14. So this will come out as 25 into 10 power minus 14. And this 10 power minus 14, 10 power minus 14 will cut. And we are going to get the answer as mu is equal to 1.2 plus. आप यहाँ से point हटा दो 64 by 250. ठीक है? And now you can just divide it. इसको divide करिए. एक digit तो नहीं, 2 digit तक तो करना ही चाहिए. So plus, if you divide it, 250 divided by 64, you will get point is 2 times 500. 140 will come out. 500, 140. 140, if you find this, you will put the value as 5. Yes, 0.25 is perfect, I think. So now this mu will come out as 1.45. And all of you know that mu का कोई unit नहीं होता. So we got the answer मिला. Now you see, I will tell you some MCQ question. It may be asked, this has been asked in NEET. The MCQ question देखो बच्चों, कि refractive index of the material of a equilateral prism. The prism is what? Equilateral. That means all the angles are what? Equal and of 60 degree. Sub angle 60 degree के हैं. That means A will be 60 degree. A की value 60 degree. Then what is given to you? The refractive index is given to you as root 3. And what they're asking you? Angle of minimum deviation. आपको delm पूछा गया. They've asked you delm. So what you are going to use? The formula, that is prism formula. N is equal to sine A plus del m by 2. A plus del m by 2 divided by sine A by 2. You know that the refractive index is root 3. Place this as root 3 is equal to sine A plus A is how much? So this will be your sine 60 plus del m by 2. And this is how much? This is sine 60 by 2. Sine 60 by 2 will be how much?
sin 30. So we are getting the answer out. Cross multiply. So cross multiply kariye. So we are going to get it as sin 60 plus del m by 2. This will cross multiply. Sin 30 ki value is how much? 1 by 2. So this will be your root 3 by 2. This will come out as root 3 by 2. Wait a minute. We can write it again. This will be your sin 60 plus del m by 2. And this is how much? Sin 30 will cross multiply. So this will become root 3 by 2. This is root 3 by 2. Now we get the answer. Root 3 by 2 kiski value hoti hai? That is your again sin 60. So we place it. We place sin 60. So now if I write it, this will be your sin 60 plus del m by 2 is equal to sin 60. Sin goes from both the sides. You are going to get 60 plus del m by 2 is equal to 60. So 60 plus del m is equal to 120 degree. Or we can write del m is equal to what? 120 minus 60 is 60 degree. So the answer will be 60 degree. Tick it in 60 degree. One more question. Now see what they have given you. A ray is incident at an angle of incidence I on the surface of a small angle prism. It is a small angle, thin prism. It is a thin prism. ये thin prism है. और आपको मैंने बताया था कि thin prism में आप क्या करोगे? Theta is nearly equal to what? Sin theta. Sin theta की जगह आपको theta लिखना है. So now you see there's a thin prism and emerges normally from the opposite face. अब जब इसमें गिर रहा है, it is emerging out normally. Means what? You see now, it's coming like this. And then it's going to emerge normally. ये normally निकल के चला जा रहा है. It's going out normally. That means this angle must be what? ये जो angle है वो कितने का होगा? 90 degree. This should be 90 degree. Now what they've asked you, if the refractive index is mu, इस material का refractive index mu दिया है, and they're asking you that the angle of incidence is nearly equal to how much? इनमें से किसकी value, कौन सी value angle of incidence की है? And what is the angle of incidence here? This is the angle of incidence, I. I think figure is clear. This is a thin prism. This is going, when it is incident here, as incident हुआ, और second वाले surface से normally निकल के चला गया. That's why I made it as 90 degree. Now what they're asking you prism, this angle of incidence को आप find out करो. इसमें से कौन सा option सही होगा? But the condition is what? This is a thin prism, right? और एक और चीज देखो, ये ऐसे चली जा रही है. इसका मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा था? Remember, that was R2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस E था. ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 0. R2 and E both are equal to what? 0 degree. ये दोनों के दोनों क्या हो गया? 0 degree. और आपको एक और चीज पता थी कि R1 plus R2 is equal to A. बिल्कुल. R2 क्या हो गया? 0. तो R1 की वैल्यू क्या आ गई? R1 has become equal to what? A. R1 has become equal to A. Now what they're asking you? I. और यहाँ देखो बच्चा, ये नॉर्मल है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. So this is your R1. ये R1 है. R1 किसके बराबर आ गया? A के बराबर. जब ये A के बराबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Because we know from Snell's law that the refractive index mu is equal to what? Sin I by sin R1. Right? And we know that the prism is thin, so we can ignore the sign. So mu is equal to I by R1. What is R1 here? R1 we have got it as A. So mu is equal to I by A. And therefore, I is nearly equal to what? Mu A. I किसके बराबर आ गया? Mu A. So which is the option here? Mu A. The C option is the correct option. Right? So this is all about your prism and the prism numericals, which are very important. Most of the topic in prism I have covered up. So in the next class, in my next video, we are going to see refraction through lens. पहले उसकी थ्योरी एंड फॉर्मूले देखेंगे थोड़े से, एंड आफ्टर दैट उसके बाद लेंस के न्यूमेरिकल्स. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.